dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 4, that is get familiar with mouse. So आज की क्लास में हम किसको कवर अप करने वाले हैं? माउस के बारे में हम कवर अप करने वाले हैं. So चलिए लर्निंग दिस चैप्टर देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल माउस बटन्स, होल्डिंग अ माउस, माउस पॉइंटर, using mouse buttons on the desktop, pressing the mouse buttons and dragging the mouse. So we are going to cover up all these topics in this chapter, okay? So children, here we will learn how to use a computer mouse. So you have already studied about the main parts of the computer. कौन-कौन से थे? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? माउस के बारे में. So सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे माउस बटन्स के बारे में, okay? So basically there are 3 buttons on the mouse. How many? 3. First, left button, okay, on the left hand side. Second one is right button on the right hand side, and then you have a scroll wheel between the left and right buttons. So basically you have 3 things on the mouse. So 2 buttons, left and right, and scroll wheel. Here you can see that which is present in between the left and right button, okay? Now let's see how to hold a mouse. So how holding a mouse, let's understand this concept, holding a mouse. So hold the mouse gently with your right hand and rest your palm on it. Here you can see that आपको राइट हैंड से अपने माउस को पकड़ना है और जेंटली क्या करना है, उस पर अपना हाथ रखना है. और कैसे रखना है अभी देखिए यहाँ पे. Put your index finger on the left button, okay? Here you can see index finger on the left button and middle finger on the right button as shown here. Here you can see in this picture, middle finger on the right button and index finger on the left button. Did you know a mouse is used to point at items shown on the monitor? अब बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि डेस्कटॉप पे हमें कुछ आइटम्स नजर आता है, फाइल, फोल्डर्स, आइकन्स, राइट? सो वहां पे जो आइटम्स है उनको पॉइंट करने में ये माउस आपकी हेल्प करता है. देखिए अभी कैसे. So first of all, mouse pointer. When we move the mouse around, the arrow on the screen also moves around, right? Here you can see this is the pointer. This arrow is called the mouse pointer. क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? माउस पॉइंटर बोलते हैं. We can move the mouse pointer in any direction by moving the mouse. So आप क्या कर सकते हो बच्चों? इस पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो. कैसे? जैसे ही आप अपना हाथ जो है राइट हैंड है उसे माउस पे रखोगे अपने पाम को, और जब अपने पाम की हेल्प से माउस को मूव करोगे किसी भी सरफेस पे, सो आपका जो कर्सर है, जिसे हम कर्सर भी बोलते हैं या माउस पॉइंटर, ये भी क्या करता है? मूव करता है, ओके? कर्सर ये इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट आप समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर में. स्टिल यू कैन से माउस पॉइंटर, ओके? नाउ क्विज मैनिया. सो राइट द नेम्स ऑफ 3 buttons ऑफ अ माउस. अभी हमने 3 buttons के बारे में देखा था, 2 buttons and 1 स्क्रॉल व्हील, ओके? सो आपको इन तीनों के यहाँ पे नाम लिखने हैं. नाउ लेट्स सी यूजिंग माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप. So the first screen we see after our computer is started is called desktop. बच्चों आपने सीखा था कि आपके कंप्यूटर को कैसे ऑन करा जाता है. So जो पहली स्क्रीन आती है that is called desktop. The small pictures on the desktop are called icons. So बच्चों जो आप ये छोटे-छोटे pictures देख रहे हैं that's called icons. And there is also a start button. Here you can see this window is a start button. Okay, window icon. Now on the bottom left corner of the desktop, here you can see, okay? So basically here you can see आइकन्स, ओके, माउस पॉइंटर एंड स्टार्ट बटन. तो यहाँ पे क्या किया गया? पॉइंट आउट किया गया है, सबकी रिनेमिंग की गई है, आप देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, दीज आर आइकन्स एंड दिस वन इज स्टार्ट बटन, ओके, नॉट बटन्स. नाउ हियर प्रेसिंग द माउस बटन्स. अब हम देखेंगे कि अगर हम माउस के बटन्स को प्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं और कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं. सो प्रेसिंग द बटन इज कॉल्ड अ क्लिक. जब आप किसी भी बटन को प्रेस करते हो दैट इज कॉल्ड क्लिक. एंड क्लिकिंग द लेफ्ट एंड राइट बटन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. इसी तरीके से जब आप राइट या लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो ये कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ माउस क्लिक्स. फर्स्ट इज लेफ्ट क्लिक, देन डबल क्लिक एंड right click. So left click क्या होता है? Click on the left button once, that is called left click, and this is used to select an activity after you point to it. Follow the given step to select an icon on the desktop. The step number 1 is move the mouse so that the mouse pointer points at the icon. Step number 2, click the left button. We see that the color of the icon changes. Here इसमें स्टेप नंबर 2 में क्या बोला है? जैसे ही आप लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे
click the left button, we see that the color of the icon changes. How? We'll see it now. This means the icon is selected. अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक्चुअली बोला क्या गया है, पहले हम लेफ्ट क्लिक को समझ रहे हैं. सो लेफ्ट क्लिक क्या होता है, जैसे आपने लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक. ओके, और ये जो एक्टिविटी है, जो लेफ्ट क्लिक आप परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज यूज टू परफॉर्म आफ्टर यू पॉइंट टू इट. दैट मीन्स अगर आपको कोई आइटम सिलेक्ट करना है ऑन द डेस्कटॉप और एनीवेयर, फॉर एग्जांपल फाइल एक्सप्लोरर, सो उस केस में आपका लेफ्ट क्लिक हेल्प करता है उस आइटम को सिलेक्ट करने में. एंड आपको कैसे करना है, सबसे पहले अपने माउस के पॉइंटर को उस आइकन पे ले जाइए, एंड व्हेन यू विल क्लिक, आई मीन लेफ्ट क्लिक ऑन इट, तो आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा. कैसे? हल्का सा ग्रेइश इस पे क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा. ठीक है, वो डिपेंड करता है, आप उससे क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो. जब आप आगे विंडोज 10 या 11 के बारे में पढ़ोगे तो आप उसे भी सीख लेंगे. ठीक है, सो आप जब लेफ्ट क्लिक को क्लिक करोगे, लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे, सो उस टाइम क्या होगा, आपका जो आइकन है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपको उसमें हल्के से चेंजेस भी नजर आएंगे क्योंकि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. नाउ हियर यू कैन सी दिस one is selected icon. Okay, now let's say double click. So click the left button twice quickly. This is used to start the activity after you have pointed at it. So बच्चों आपने यहाँ देखा कि डबल क्लिक क्या होता है. डबल क्लिक उसे कहते हैं जब आप लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक. और कोई भी, जैसे आपने एक बार क्लिक करा, सो आपका आइटम सिलेक्ट हो गया, बट इफ यू विल क्लिक ट्वाइस, सो आपका वो जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर एप्लीकेशन है तो ओपन हो जाएगा, फाइल है वो भी ओपन हो जाएगी, फोल्डर है वो भी ओपन हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डबल क्लिक से क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. प्रेस 2 टाइम्स क्लिक क्लिक, हियर यू कैन सी. Okay, now let's see, follow the given steps to open an icon. Suppose we are going to perform double click, so move the mouse so that the mouse pointer points at the icon. आपको पहले अपने माउस के आइकन को, माउस के पॉइंटर को उस आइकन पे लेके जाना पड़ेगा. एंड डबल क्लिक द लेफ्ट बटन, द आइकन गेट्स ओपन. और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका आइकन है जिस पे आपने डबल क्लिक किया है, उससे क्या हो जाएगा, वो आइकन ओपन हो जाएगा. हियर यू कैन सी दैट हमने दिस पीसी पर 2 बार क्लिक करा एंड आपका ये फाइल एक्सप्लोरर क्या हो गया, ऑन हो गया. Now let's see right click. Okay, so click the right button once. This is used to control the activity after you have started it. So right click क्या होता है, अगर आप right click को एक बार प्रेस करते हो, so आपका जो भी आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह लो, आपको एक मेन्यू ओपन होता है, उसमें से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग हियर राइट बटन, सो आपका जो एक मेन्यू टाइप ओपन होके आता है और उसमें से आप कुछ भी, जो भी एक्टिविटी वहां प्रेजेंट है उसे परफॉर्म कर सकते हो. ओके, now dragging the mouse, so moving the mouse while keeping the left button pressed is called dragging. अगर आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर रखा है and you are moving your mouse, that called dragging. Okay, and we drag a mouse to draw pictures or to move objects from one place to another. जैसे आप पेंट में आगे ड्राइंग बनाना सीखेंगे, देन आपका ये ड्रैगिंग कॉन्सेप्ट वहां पे वर्क करेगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. एंड अगर आपको कोई एक आइकन दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, स्टिल आपका ड्रैग जो एक्टिविटी है आपको इसकी जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स सी वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी में आप देखिए, क्लिकिंग इज टू चूज अ पर्टिकुलर फंक्शन और आइटम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन बाय प्रेसिंग लेफ्ट बटन ऑन अ माउस. तो वोकैबुलरी में क्या बोला है, क्लिकिंग क्या होता है बच्चों, क्लिकिंग इज टू चूज अ पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, सो आपके पास 3 टाइप की क्लिकिंग है, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक. ओके, सो ड्रैगिंग इज टू मूव सम फोल्डर, फाइल और आइकन एक्सेट्रा across the screen of a computer using the mouse. So dragging भी आपने देखा, dragging क्या होता है, if you are pressing left button of a mouse and moving your mouse, that's called dragging. और dragging क्यों use होता है, for drawing a picture, moving some folder, file और icons. Is it clear? Now let's see in a nutshell. So there are 3 buttons on the mouse, left button, right button and scroll wheel. We have already understood this one, right? The arrow seen on the monitor is called mouse pointer, right? So the first screen we see after our computer is started is called desktop. Okay, so पहली जो screen आपकी नजर आती है कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, that is called desktop. And the small picture on the desktop are called, tell me what does it called? That is called icons. And pressing the button is called a click. Okay, and it depends what type of button are you clicking. That's on the basis of that you differentiate it, left click and right click and double click. Is it clear? Now there are 3 types of mouse clicks, and what are those? Left click, double click and right click. Is it clear? Now that's all for this chapter, students. I hope you have understood the concept we have covered in this chapter, right, and vocabulary and in a nutshell. Now what you have to do, you have to check your knowledge. Okay,
this one you have to complete this exercise, and you have to also revise the chapter. And I'm going to meet you in the next class with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.